Hello students, good afternoon everyone. Students, if you remember on Saturday, we completed with linear equation in two variables. And today we are going to start with chapter number 2, which is quadratic equations. So students, if you remember during the time of base building and even when we studied quadratic equation, we started with the meaning of the word equation. So do you all remember? Can anybody tell me what is exactly an equation? Exactly. When we say equation, correct answers by almost everyone. Equation is basically a mathematical statement where you are going to have two things. Two things मतलब number one is variable and number two is an equal to sign. मतलब variable दिख रहा है हमें, equal to का sign दिख रहा है, तो we call it as equation. So let us take few examples. If you remember the same set of examples we took for the first chapter, linear equation में भी same examples लिया था. In all these 6 examples in front of you, you all can see we have got variables and we have got an equal to sign. If दोनों चीज रहेगा तो हम उसको equations बोलते थे. I hope you all remember this. Great. Equation तो clear है. But now what is quadratic equation? So I won't give you the definition directly. Rather we'll take an example. एक example देखेंगे कि quadratic equation आया कहाँ से. And after that we'll try to understand what is the definition, what is the standard form of quadratic equations. So students, do you remember the last thing that we did? हमने last चीज क्या पढ़ा था? Word problems in linear equations. आप लोगों को याद है? Exactly. We saw in word problems, we used to have some values given, there used to be some conditions given, and based on that, हम क्या करते थे? हम equations frame करते थे, and then we used to solve the equation. Now just imagine, ऐसे समझो कि हम same चीज कर रहे हैं. And this time I'll give you a question. The question is based on rectangle. ठीक है, rectangle पे based हमारा एक question. अच्छा, if I give you a value, if I say that the area of this rectangle is 32 square centimeters, समझो ये दिया है मैंने value, that the area of rectangle is 32 square centimeters. Now we don't know what the length is and we don't know what the breadth is. हमें length भी नहीं पता है, breadth भी नहीं पता है. But एक चीज we know that the length of rectangle is 4 centimeter more than the breadth. Basically we don't know what breadth is, we don't know what length is, but दोनों के बीच का एक relation is something that we know, and the relation is that the length is 4 more than breadth. मतलब length जितना भी है breadth का 4 ज़्यादा होगा. If the breadth is x centimeter, then the length has to be x plus 4 centimeter. Do you all agree with this? अगर length 4 ज़्यादा है, तो what does it mean? It means जो भी breadth है उसमें plus 4 करेंगे तो we will get the length, right? So this is the only information that we have. We know length कितना है, we know breadth कितना है, we know area कितना है, ठीक है? Now looking at all these, ये तीनों information देख के, let's try to frame an equation. Do you know anything about length, breadth, area? कोई relation पता है क्या? Exactly. Students, what do we know? We know that length into breadth is equal to area of rectangle. This is the relation that we know. तो अब हम क्या करेंगे? We'll put the values. हम इसके अंदर values put करेंगे and just try to see what do we get. अब length की जगह if I put the value of length, it will be x plus 4. अगर मैंने breadth की जगह उसका value put किया, it will be x. And area is 32. If you see, I have substituted their values. ठीक है, अब हमें करना क्या है? Basically, we need to multiply. यहाँ पे bracket दिख रहा है ना, multiplication का sign है. मतलब हमें करना क्या है? To multiply. Now how to multiply? We know ये जो x है ना, ये x से multiply होगा. Bracket के अंदर है ना, तो x into x will be x square. And after that x into x हमने x square किया, and उसके बाद क्या होगा? ये जो 4 है, ये भी x से multiply होगा.
So 4 into x will be 4x. ठीक है, we have opened the bracket. X into x is x square. 4 into x is 4x, and this 32. If I bring this 32 from right side to left side, it comes here and it becomes minus 32 equal to 0. Now students, can you see that here we can see that we have got an equation. ये जो हमें कुछ information दिया था about a rectangle, area, length and breadth, उससे हमें एक equation मिला. Just like we used to frame equations in the first chapter. But क्या ये equation आपको linear equation की तरह दिख रहा है? Exactly. This does not look like linear equation. इसकी तरह नहीं दिख रहा है. If you see what's the problem here, the degree is not 1. Here the degree is 2, you can see. Highest power is 2. And second thing that you can see, we don't have two different alphabets here. We don't have two different variables. Rather, we have only one variable, x here. तो अब हम अगर समझने का ट्राई करें कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ जो दो चीज याद रखना है. नंबर 1 वेरिएबल, नंबर 2 डिग्री. सिर्फ दो चीजें अपने को याद रखना है. Number 1 variable means we should have only one variable, and number 2 degree means the degree should be 2. Simple. अगर ये दो चीज याद रहेगा ना, so we can easily know what quadratic equation is. One variable, degree 2. एक ही variable होना चाहिए and degree should be 2 students. I hope this is clear. One variable and degree 2. बस यही definition है quadratic का, आप ऐसे समझ लो. Why I am saying so? Because any equation, कोई भी mathematical equation जो आपके पास है, if it has one variable and if its degree is 2, it is called quadratic equation. Are we clear with this? तुमने क्या देखा? Meaning an equation with one variable and degree 2 is quadratic equation. तो अपने को बस दो चीज याद रखना है, variable 1, degree 2. क्या याद रखेंगे सब लोग? Variable 1 and degree 2. अच्छा. Now going back to linear equation. After we studied what linear equation is, उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद भी studied the standard form. कि standard form क्या होता है? How are all linear equations written? उसके बारे में हमने study किया था. So let's do the same thing here. Let's take few examples. देखो हमने क्या किया है ना, we have taken few linear equations in front of us. कुछ equations हमारे सामने हमको दिख रहे हैं. ठीक है? If you check all three equations, I want you all to focus on the first terms of all three. तीनों के first term पे ध्यान दीजिए. I can say first term यहाँ पे is x square, second term भी x square, third term भी x square, which means the first term is going to be the variable with degree 2. सब जगह सेम दिख रहा है ना? Across all three equations, the first term is variable with degree 2. But we know that variable always comes with a partner. Variable always have a number associated with it, and that number is called as the coefficient. So in the first case, the coefficient is 1. In the second case, the coefficient is 2. In the third case, it is 5. There's no compulsion 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा. It can be any number. तो क्या बोलेंगे? Let that number be a, just like linear equation. हमने बोला let that coefficient be a. So we can say that the first terms, सारी questions में देखोगे, जो first term है हमारा, it is in the form ax square. मतलब variable square होगा, उसके साथ में कोई coefficient होगा. Okay, when you come to the second term, can you see across all three equations, the second term, it has coefficient 4, coefficient 3, coefficient 1. And सब जगह पे variable कितना है? x है. मतलब power 1 के साथ हमारा variable x दिख रहा है. So I can say the second term is in the form of bx. Again, b is the coefficient. पहला term x square की form में था, and second term is in the form of x. Can you check the third term here? जब आप third term check करोगे, we have here minus 32. Now this minus 32, it can be written as plus और bracket में minus 32 कर दिया. Then यहाँ पे 6 दिख रहा है, third case में 15 है, which means the third term everywhere is a constant term without any variable. Third term can be any number. तो वहाँ पे हमने लिख दिया. Now look at all three equations. Do they have a standard form? Do they have a common pattern? Yes, they do, which is ax square plus bx plus c equals to 0. तो आपको standard form समझ में आया? Standard form.
समझा कि नहीं? ओके, वेरी नाइस। श्रावणी, हर्षित, सिद्धि, अदिति, करेक्ट किया, राइट। अब चलो नाउ मूविंग अहेड। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन में, यू रिमेंबर वी यूज्ड टू हैव अ कंडीशन। अभी कंडीशन क्या होता था वहां पे? a शुड नॉट बी 0, b कैन नॉट बी 0, याद है? सो लेट अस ट्राई टू चेक कि यहाँ पे भी वैसा कुछ है क्या। सी बस आपको ना क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है, वेरिएबल 1 एंड डिग्री 2। Now students, as I say, A, B, C are not variables here. A, B, C are numbers. तो A, B, C कौन से numbers हैं? It can be any number. आज तक आपने आपके मैथ्स के टेक्स्ट बुक में जो भी नंबर्स देखे हैं, वो सारे में से कोई भी हो सकता है। तो we can say A, B and C are real numbers. अच्छा, now coming to real numbers, we know real number में zero भी आता है। तो let's try to think कि A zero हो सकता है क्या? Just try to imagine. अच्छा, अगर हमारा A जो है वो zero है, तो 0 into x square, can I say it will be 0? 0 into x पर 0 हो जाएगा, जिसका मतलब हमारा x square is no longer a part of this equation. x square पूरा चला गया, 0 बन गया। And अगर x square चला गया, which means we lost a variable with power 2. अगर power 2 नहीं बचा, degree 2 नहीं बचा, it means it will no longer remain a quadratic equation. अगर power 2 ही चला गया, तो power 1 बचा यहाँ पे, which means this equation has now become linear, which is not allowed. So what we know that a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, because a 0 होने की वजह से हमारा डिग्री 2 नहीं रह जाता। And we know दो चीजें कंपलसरी हैं, one variable and degree 2. तो we know a cannot be 0 students, हमारा a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। If you check for b, अगर b 0 हुआ तो भी चलेगा, because we still will be having one variable and degree 2. तो b कुछ भी हो चलेगा। If you talk about c, even c 0 हुआ तो भी चलेगा, because c 0 होने से we still have one variable, we still have the degree to be 2. So this is the standard form. What is it? ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers, but a should not be 0. ठीक है, सिटीज आस्किंग कोई और अल्फाबेट्स लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेगा क्या? यस चलेगा, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो व्हाट आई वांट स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू गिव द हेडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो स्क्रीन पे दिख रहा है प्लीज राइट इट, आपको आगे जाके काम आएगा। तो हमें क्या लिखना है? द डेफिनेशन एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लीज इन्फॉर्म मी जब आपने इतना लिख दिया। Siddhi, everything that you can see on screen, you need to write the definition and the standard form. Yes, निहारिका, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? दैट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे वन वेरिएबल एंड डिग्री 2 हो, एंड सेकेंडली हमने देखा द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. I hope everybody is clear with this, the meaning, the definition and the standard form. ठीक है, अभी भी नो, अभी चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इट मींस वी आर गोइंग टू डील विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डील करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है ना, दे आर आस्किंग अस टू राइट एनी टू लीनियर इक्वेशन, मतलब आपकी मर्जी से कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस लिखकर दिखाओ, ऐसा बोला है। इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब हम कैसे लिखेंगे लीनियर इक्वेशन? सिंपल, वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्म, वी नो दैट वी शुड हैव अ टर्म विद वेरिएबल एंड पावर 2, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म x स्क्वायर हो सकता है, m स्क्वायर हो सकता है, y स्क्वायर हो सकता है, जो भी वेरिएबल आपको पसंद हो। फिर हमारा जो सेकंड टर्म है ना, इट शुड बी विद पावर 1, मतलब फिर से x स्क्वायर नहीं आएगा, इट कैन बी x। अगर आपने y स्क्वायर लिया है तो सेकंड टर्म हमारा y होगा, जस्ट लाइक द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx इट वाज। तो हमने एक x स्क्वायर वाला टर्म लिखा, फिर हमने x वाला टर्म लिखा। द थर्ड टर्म विल बी अ कांस्टेंट टर्म, व्हिच मींस एनी नंबर, कोई भी एक नंबर होगा हमारा। तो मैंने ऐसे नंबर, इट कैन बी 5 10 7 8 9, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो हमने नंबर लिख दिया।
ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज अभी आपको प्रॉपर साइंस इक्वल टू का साइन वगैरह देना पड़ेगा. यू कैन चूज एनी कोएफिशिएंट्स फॉर x स्क्वायर एंड x, कोई भी नंबर. अभी मुझे x स्क्वायर के साथ 1 ही रखना है फॉर एग्जांपल, x के साथ में 5 रखना है. इट इज योर चॉइस. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 2x स्क्वायर minus 3x plus 10 equal to 0. ठीक है. तो आपको बेसिकली करना क्या है, यू नीड टू राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बस ध्यान दो, फर्स्ट टर्म शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल स्क्वायर, सेकंड वाला bx के फॉर्म में, एंड थर्ड वाला c यानी कोई नंबर इक्वल टू 0. ठीक है. तो राइट एनी टू. तो स्क्रीन पे आई जस्ट चेंज द स्क्रीन. आप स्क्रीन वाला मत देखो, कोई भी लो खुद से लिखो एंड टेल मी वंस यू आर डन. No branches on the right hand side, we want 0. As per standard form वहाँ पे 0 ही होना चाहिए. ओके लेट्स सी. ठीक है. चलो सबने लिखा प्रॉपर्ली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको समझा. ओके ग्रेट. ठीक है. सिद्धि अब्दुल्ला, जो भी आप लोग ने चैट में आंसर्स लिखे हैं, यस दे आर करेक्ट. वेरी नाइस. यस योशा करेक्ट इट इज. ठीक है. जिसको स्क्वायर लिखना नहीं समझ चैट में, आई कैन अंडरस्टैंड. यस हर्षित, हम कोई भी एक वेरिएबल यूज करेंगे. यू कैन आइदर यूज x स्क्वायर एंड x, y स्क्वायर एंड y. दो वेरिएबल एक साथ नहीं चलेगा बिकॉज़ वी ओनली हैव वन वेरिएबल हियर. अच्छा ना, मूविंग अहेड स्टूडेंट्स. अभी हमें क्या बोला, लुक एट द क्वेश्चन. इट इज सेइंग यस मेक योर आंसर इज करेक्ट. It is saying decide which of the following are quadratic equations, which means few equations will be given to us. Not sure quadratic है कि नहीं है, हमको नहीं पता वो क्या है. We need to decide. हमें चेक करके बताना पड़ेगा कि वो quadratic है कि नहीं है. ठीक है. We need to check and tell them. अभी कैसे करना है, I'll inform you. See. सबसे पहले तो equation will be given to us. हमको equation दिया जाएगा. अब प्रीवियस स्लाइड आप लोगों को नहीं लिखा था ईशान. ठीक है. आप लोगों को मैंने खुद से लिखने बोला था. So I didn't want you to write those equations जो मैंने लिखा है, सबको खुद से equations लिखने थे. So if you check here, an equation will be given to us. And हमें कौन सी दो चीज चेक करनी है? Which two things do we need to check when you want to know कि quadratic है कि नहीं है? The two things that we know are one variable and degree 2. Variable 1 होना चाहिए, degree 2 होना चाहिए. That's the only thing. तो यहाँ पे चलो check करते हैं. Look at the equation. I can only see variable x is here. ठीक है. तब क्या बोलेंगे, here x is the only variable. x हमारा क्या है, only variable है. And when you check the degree is also 2. तो हम क्या बोलेंगे, this equation is a quadratic equation. समझा. बस दो चीज चेक करना था. कौन सा दो चीज था वो, x यानी कि only one variable and the degree 2. Was it a very easy question for 1 mark? बहुत easy था, yes or no? एकदम बेसिक क्वेश्चन था. तो एक बार ये वाला लिख लो, देन वी डिस्कस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. यस अब्दुल, जो लिखा है प्रॉपर ये अपने को करना पड़ेगा.
I hope you all are done with this. ये question सबका हो गया. So we are very clear. We are supposed to check for two things, right? But students, सब question इतने easy नहीं रहेंगे. In fact, I'll tell you this. We need to check for these three steps. अपने को ना तीन step को देखना पड़ेगा. मतलब है ना, before checking for one variable and degree two, हमें तीन R. We have to take care of three R's. मतलब तीन step है and तीनों R से ही start होता है. So once three R's are done, समझो एक checklist की तरह है. Once you check for all three R's, only then you have to check for quadratic. मतलब क्वेश्चन को देखते ही quadratic है कि नहीं चेक नहीं करने का. First of all तीनों R को check करो उसके बाद. Now what are these three R's? The first R is remove bracket if any. मतलब क्वेश्चन में अगर कोई भी ब्रैकेट है तो रिमूव ब्रैकेट. एज यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. उसको निकाल के साइड में नहीं रखना है अपने को. रिमूव डिनोमिनेटर इफ एनी. अगर क्वेश्चन में कोई डिनोमिनेटर दिखता है तो यू हैव टू रिमूव दैट डिनोमिनेटर. मतलब उसको किसी तरह से हमें हटाना है. And RHS should be zero. Your right hand side compulsory has to be zero. अगर वो zero नहीं है तो हमें उसको zero बनाना पड़ेगा. Only then we will check. तो 3 R's check करना है. क्या है? Remove bracket if any, remove denominator if any, and RHS should be zero. Step सबको समझ में आ रहा है क्या? Now once we start solving the questions, we will check exactly करना क्या है. So let's start with the next question. Look at the question here. It is y square equals to 5y minus 10. पहले तीनों R है कि नहीं देखते हैं. Luckily no bracket here. Luckily no denominator here. But is the RHS zero? यहाँ पे right hand side हमारा zero है क्या? No, it is not zero. And how can we make it zero? It's very simple. Let me tell you. जब आपका right hand side zero नहीं है, तो जो भी वहाँ पे zero के जगह पे है, you just need to shift that term to left side. Very good, Niharika. Whatever is there on the right hand side, shift it to the left hand side, it will automatically become zero. कुछ नहीं बचेगा right में, तो वहाँ पे zero ही बचेगा. So let us see. Y square is proper. I don't want this 5y and minus 10 on right side, तो हम दोनों को shift करेंगे. So 5y will comes from right to left becomes minus 5y. And when you shift this minus 10 from right to left, you get plus 10 equal to 0. Now you can see we have no bracket, no denominator, even RHS is 0. Now just check. अब हम check करेंगे दो चीजों के लिए. Variable 1 and degree 2. Do we have one variable here? If you check, yes, we do. Y is the only variable. And is the degree 2 here? Yes, the degree is also 2. Which means we can say that, yes, this is a quadratic equation. तो दो ही चीज चेक करना है, पर उसके पहले अपने को चेकलिस्ट देखना है 3 R's का. तीनों R का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा जजमेंट. ठीक है. अच्छा, अभी जीरो कहाँ से आया? जब राइट साइड पे कुछ नहीं बचता है ना, मैंने शिफ्ट एवरीथिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो वहाँ पे जीरो बच गया. गॉट इट सिद्धि? तब जो राइट साइड पे 5 था, मैंने उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, तो कुछ नहीं बचा. विच मींस इट इज 0. ठीक है. टेल मी वंस यू आर डन विद दिस क्वेश्चन. लिख के हो जाएगा तो बताओ. If you want to write this 3 आप साइड में बुक में लिख के रख सकते हो. इट विल हेल्प यू. ये 3 आवर याद रखने के लिए हेल्प करेगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे सिर्फ आंसर की जरूरत पड़ा था. कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है अपने पास? y square plus 1 upon y equals to 2 here. So what is happening? You can see we have denominator and RHS is also not 0. मतलब ब्रैकेट तो नहीं है, बट हमें डिनोमिनेटर को भी रिमूव करना है एंड साथ में हमें RHS को भी 0 बनाना है. टू थिंग्स, देयर आर टू स्टेप्स दैट वी नीड टू परफॉर्म. सबसे पहले कमिंग टू डिनोमिनेटर. What can you see in denominator, students? Which variable or which number? What is there in denominator? Exactly. Niharika, Shavni, Disha, Aditi, Janvi, Sanskriti, Abdul. Yeah, we can see we have y here. Exactly, Isha. So if I don't want this y, so Tanvi, ये y अपने को नहीं चाहिए. So how can we get rid of this? मुझे y को हटाना है तो क्या करने का? Very good, perfect everyone. Niharika, Shavni, Disha, Janvi, Aditi.
एग्जैक्टली हमें करना क्या है, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस y. अब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y चला जाएगा. सो इफ यू हैव अ डिनोमिनेटर, आपको वो नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज चेक विद मल्टीप्लिकेशन कि मल्टीप्लिकेशन से वो जाता है कि नहीं जाता है. तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय y. आप किसी एक से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो इट शुड बी डन फॉर द होल इक्वेशन. So we wrote multiplying throughout by y. So which means each and every term will be multiplied by it. By which you get y into y square plus y into 1 upon y equals to y into 2. सबको multiply कर दिया. So multiply किया क्यों था हमने? Why did we actually multiply? Because हमें y को cancel करना था. So look at the second term. y हमारा चला गया. So what do you have, y into y square as y cube plus cancel होने के बाद क्या बचा, 1 equals to y into 2 is your 2y. Okay. Now we have removed the denominator, but ours is still not 0. तो हम क्या करेंगे, we will bring this 2y from right to left. So you get y cube minus 2y plus 1 equals to 0. ठीक है, तीनों r हमारा चेक हो गया. We have checked all three r's are done. Now is it quadratic? Let's try to find out. Y is the only variable, luckily yes, but here the degree is not 2. And if the degree is not 2, what does it mean? Is it quadratic? एक ही condition satisfy हुआ, दूसरा नहीं हुआ तो quadratic होगा क्या? A big no. It is not a quadratic equation. तो हम क्या बोलेंगे? The given equation is not quadratic. I hope we know. दोनों condition satisfy होने पे ही quadratic बोलेंगे. Yes or no? चलो ग्रेट. अच्छा, राइट दिस सम. इसके बाद एक क्वेश्चन सिमिलर काइंड का आई विल लीव टू यू ऑल टू सॉल्व. आप लोग सॉल्व करके देखो. तो पहले समझ के प्रॉपर्ली लिख लो एंड देन सेकंड वाला आप लोग करेंगे. Okay, I can see almost everyone is saying that they are done. So are you all ready to start with the next one? If I give you a question of similar kind, same type of question दिया तो कर पाएंगे solve? Okay, so I'll give you the question. आप लोग try करो and then we'll discuss. ठीक है, फिर हम discuss करेंगे कि whether it is correct or not. So here comes the next question on your screen, students. Similar है. Why I'm saying similar? Because you can check here that we have a denominator just like the previous one, and not just that, here the right hand side is also not 0. मतलब हमें पहले तो denominator को हटाना पड़ेगा. Then we have to convert the RHS into 0, and then only we'll decide कि quadratic है कि नहीं. So let us start and then we'll discuss the answers. जितना हो जाएगा बस मुझे इतना बताओ कि what did you get? It is quadratic or not? तो मुझे समझेगा कि आपने solve कर लिया question. Okay, very nice. I can see correct answer by everyone so far. That is good. So we'll discuss this now. What do we have is, we will first of all try to get rid of the denominator. हमको x नहीं चाहिए. We don't want this x in the denominator. So what are we going to do? Multiplying throughout by x, which means x into x
plus x into 1 upon x equals to x into minus 2. Proper all the terms are multiplied by x. अब इसके बाद में let's try to solve it ahead. X into x will be x square. Then x cancel. You get plus 1 is equal to minus 2x. So you get x square. When I shift this, जब हमने इसको shift किया from right to left, you are going to get plus 2x plus 1 is equal to 0. So we have checked all the three boxes, no brackets, no denominator, as well as no x is also 0. So when you check here, the variable x is the only variable present. Degree is also 2, which means we can say it is quadratic equation. ठीक है, जिस सब लोग ने मुझे करेक्ट आंसर लिखा, सबने प्रॉपर्ली किया है, किसी ने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, प्लीज चेक विद योर आंसर्स. Perfect, great. I'm very proud सबने properly किया है, very nice. So we'll see few more questions. Now have you noticed bracket वाला तो सब हमने किया ही नहीं अभी तक. So let's have a bracket wala question also. M plus 2 in the first bracket is getting multiplied with m minus 5 is equal to 0. So what is to be done here? Can you see we have no denominators, ours is also 0. Which means only one thing is to be done, which is opening the brackets. Do you know how to open these brackets? वैसे किया है हमने पहले भी, 7th standard, 8th standard में किया है. Exactly. जब हमको ओपन करना रहेगा तो what are we going to do ना? सबसे पहले ध्यान दो. We have two brackets here. तो हम क्या करेंगे ना, पहले look at the highlighted part. I have highlighted the first term of the first bracket. Also I've highlighted the whole second bracket. Which means when you want to open such brackets ना, आप क्या करोगे? सबसे पहले will multiply first term by second bracket. Then second term will be multiplied with second bracket. ध्यान से देखो. First term multiplied by second bracket, which means m into m minus 5. Then second term मतलब plus 2 into m minus 5. हमने क्या किया, ध्यान से देखो फिर से, just see. First term multiplied by the whole second bracket, then second term again multiplied by the whole second bracket. So what you have, let's open. M into m square, m into minus 5m, minus 5m, plus 2 into m is plus 2m, plus 2 into minus 5 is minus 10 is equal to 0. Everything is done. Yeah, but still we can see a like term. Like terms दिख रहा है अपने को, a pair of like terms we can see. Minus 5m plus 2m. You know minus plus minus होता है. 5 minus 2 is going to give you 3, but don't forget to write the sign of greater digit. क्या मिलेगा, m square minus 3m minus 10 equals to 0. Now it is very easy to justify कि quadratic है कि नहीं है. We can see m is the only variable, as well as the degree is also 2, which means it is quadratic equation. Got it everyone? सबको समझा? Easy है ना? Just opening the brackets, nothing else. Bracket open किया था हमने. Okay. So I want you all to solve this one. चलो फटाफट solve करो. Okay, I can see a lot of you are done already. इसके बाद I'll give you one more question again. एक question मैं दूंगी, वो खुद से solve करने के लिए, ठीक है? बहुत easy है, don't worry. In fact, all the questions we did are actually very easy, right? Is everyone done with this? Shall I give you a question to solve by your own?
Okay, fine. So here comes the next question. It is very easy, trust me. You will thank me because no brackets, no denominator, only right hand side is not zero. तो फटाफट से करो. फिर हम डिस्कस करेंगे. Okay, students, chalo, we discuss the answers now. I am getting mixed answers here. We know that right side is not zero, so we'll bring right side to left. अभी cube है तो cube के पास लेके जाएंगे उसको. So you have n cube minus 3n cube plus 3n square minus 2 equal to 0 as it is. Now n cube minus 2n cube will give you minus 2n cube because 1 minus 3 is minus 2. So if you check here, yes, n is the only variable, but at the same time you can see the degree is not good. The degree is 3 over here. So हम क्या बोलेंगे? We will say that here the given equation is not quadratic. Are we clear, students? सबको समझा अच्छे से? Very nice. Please check करो किसी ने गलती से कुछ mistake अगर कर दिया रहेगा तो make sure you verify this. Okay, and now students we are going to rejoin. अब हम rejoin करेंगे and then we'll do 3 to 4 more questions based on the same concept. थोड़ा सा एक अलग टाइप की क्वेश्चन आने वाला है, so we'll discuss that. ठीक है, so let us rejoin all of you.